माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities
have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind.
Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners
have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital or social, are being built in record time. Number 2. All parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote.
Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus
to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease,
India is the world's largest milk producer with India is the world's largest milk producer, but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta.
Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched.
This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate-resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was 596 billion US dollars, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance.
These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies.
Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir,
I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। आपको बताएं कि 1 करोड़ घरों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। ये जो सोलर पैनल लगाने की जो स्कीम लेकर के आई है सरकार, उसके जरिए ये फायदा मिलेगा। मध्य वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए, घरों में राहत पहुंचाने के लिए एक नई योजना सरकार लेकर के आने जा रही है। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अंतरिम बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि आयकर में कुछ राहत दे सकती है सरकार चुनाव से पहले, तो ऐसा कोई फायदा उन्हें नहीं मिला है। इस मोर्चे पर उन्हें निराश होना पड़ेगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो भाषण था, करीब 1 घंटे का ये भाषण रहा है अंतरिम बजट का, और इसमें उन्होंने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखा। साथ ही ये भी बताया कि 2014 के पहले
देश की अर्थव्यवस्था की किस तरह की हालत थी और आज पिछले 10 सालों के भीतर किस तरह का बदलाव आया है, इसे लेकर सरकार एक व्हाइट पेपर भी रखने जाएगी। ये एक बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है। इसके साथ ही जो अन्य अलग अलग मोर्चे हैं उन पर किस तरह से सरकार ने कामयाबी हासिल की है, ये भी ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज इस अपने अंतरिम बजट में पेश किया है। और आपको बता दें कि इसमें कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कही गई हैं, जो सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। और इसी के साथ आप जो देख सकते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कुछ रियायत देने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कर व्यवस्था है उसको सरल सुगम बनाया गया है ताकि जो करदाता हैं उन्हें इसमें कोई परेशानी ना हो। तो ये वो सारी बातें हैं जो इस अंतरिम बजट में सामने निकल कर के आई है। लेकिन इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि इसका कारण भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि अगर 2014 से अब तक की तुलना करें तो अब ये व्यवस्था की गई है नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रेजिम में कि 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है तो इसमें आपको कोई आयकर नहीं देना होगा। तो इस लिहाज से ये बड़ी राहत है। तो शायद सरकार के पास ज़्यादा गुंजाइश थी भी नहीं। सरकार का ये मानना है कि उन्होंने जितनी राहत दी है यूपीए सरकार की तुलना में ये आयकर दाताओं को कहीं ज़्यादा बड़ी राहत है, और शायद यही कारण है कि कोई बड़ी राहत देने का फैसला यहाँ पर नहीं किया गया है। सुमित, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के इस अंतरिम बजट में जैसी कि बहुत बड़ी उम्मीदें की जा रही थी वैसी तो चुनावी चीजें नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति जिस दिशा में सरकार ने अपने विकास के पहिए को आगे बढ़ाया है उस दिशा पर आगे बढ़ते हुए सरकार दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बजट पेश हुआ है और जो सबसे बड़ी बात अखिलेश बार जिसको अंडरलाइन कर रहे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयकर के टैक्स स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। स्टार्टअप्स अगर आप करना चाहते हैं, कोई नया काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप में अगर आप हैं तो आपके लिए कुछ छूटों की घोषणा की गई है और 100 यूनिट बिजली के मुफ्त का वादा किया गया है करीब 1 करोड़ घरों में। ये बहुत बड़ी बात है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के जो तमाम सेक्टर्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनको इसमें फ़ायदा हो सकता है आने वाले वक्त में। निर्मला सीतारमन का ये छठा लगातार भाषण था और करीब 1 घंटे, मेरे ख्याल से उनका अब तक का ये सबसे छोटा बजट भाषण भी हो सकता है अगर हम समय के हिसाब से देखें। अमूमन 1.5 से 2 घंटे के बीच एक बार तो वो 2.5 घंटे तक भी बोल चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड में हासिल हुआ था। टैक्स कलेक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। बजट की जो 10 बड़ी बातें आपके सामने स्क्रीन पे चल रही हैं, 3 गुना से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। बीते 10 सालों में 2.4 गुना रिटर्न बढ़ा है, करीब 2.5 गुना रिटर्न भी बढ़ा है, जो खबरें निकलकर सामने आई हमारे पास अभी निर्मला सीतारमन के इस भाषण से। करदाता की सेवाओं में सुधार हुआ है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और इसीलिए सरकार की तमाम जो नीतियां हैं, तमाम जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाती हुई सरकार दिखाई दे रही है। तो मोटे तौर पर बजट भाषण का अगर कहा जाए तो लेखानुदान, जिसको वोटर अकाउंट कहा गया, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपनी आने वाले चुनावों के मद्देनजर में इस बात को कह रहा हूं और अखिलेश शायद इस बात को इंडोर्स भी करेंगे कि सरकार कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और वो कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जिसको लेकर लगे कि बहुत बड़ा बदलाव करना चाहिए या कोई लालच या लोक लुभावन करना चाहिए। वो तमाम चीजें नहीं दिखाई दी हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है सुमित। ये जो आज अभी इंटरिम बजट आया है जिसको कि वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, लेखानुदान मांग भी, इसका एक प्रस्ताव जो था वो सरकार ने पेश कर दिया है। ये बता रहा है कि सरकार आश्वस्त है। अमूमन होता यह है कि जब आप अपने 10वें वर्ष में होते हैं, चुनाव सिर पर होता है, तो आप कई लोक लुभावन वादे करने का टेम्पटेशन होता है ताकि लोग जो है आपके इन वादों से आकर के प्रभावित होकर के आपको वोट दें। और हमने ये देखा भी कि हुआ भी ऐसा। 2013 की आप बात कर लें, 2003 की आप बात कर लें, तो इस तरह की घोषणाएं अमूमन सरकारें करती हैं चुनाव से ठीक पहले ताकि मतदाताओं को इस पर प्रभावित किया जा सके। लेकिन इस बजट में कोई ऐसा बड़ा वादा सरकार की ओर से नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार एक जो उन्होंने रास्ता तैयार किया है फिस्कल डिसिप्लिन का, उस रास्ते पर आगे चलना चाह रही है और उसमें कहीं भी दाएं बाएं वो नहीं होना चाहते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी उनकी वर्किंग स्टाइल थी, तब भी उनका एक बड़ा प्रिंसिपल ये था कि इस तरह की जो रेवड़ियां बांटी जाती है, जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, इनसे बचना चाहिए। तो लोक कल्याण की बातें वो अलग अपनी जगह पर हैं, लेकिन रेवड़ियां अलग हैं। ये उनमें एक बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन पीएम मोदी लेकर के चलते आए हैं और मुझे लगा कि अभी भी जो बजट आज पेश किया गया इसमें इसी बात का जिक्र किया गया। देखिए, कई सारी बातें सुमित चल रही थी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है इसको बढ़ा दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा महिला
महिला किसानों के लिए इस तरह की कोई बात बजट में नहीं आई है। मध्य वर्ग के लिए जरूर एक घोषणा की गई है, दाम पर उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार जल्दी ही एक योजना लेकर आएगी, लेकिन वो योजना क्या होगी इसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। और साथ ही जो पीएम आवास योजना है उसके तहत घरों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला अगले 5 वर्षों में अगले 5 वर्षों में करने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। इंटरेस्टिंग बात, बीजेपी की सांसद है, नेता है लोकेट चटर्जी, उनका ट्वीट सामने आया। उस ट्वीट में लोकेट चटर्जी लिखती है कि निर्मला सीतारमण का ये सबसे छोटा भाषण था जो बात हम कर रहे थे, केवल 58 मिनट का भाषण रहा। वो 2 घंटा 42 मिनट का भी भाषण 2020 में दे चुकी है जो करीब 2.25 घंटे का था, आप सबको याद होगा। और उस वक्त उनकी तबीयत भी खराब थी, उस वक्त भी उन्होंने करीब 2.25 घंटे का बजट भाषण पढ़ा था 2020 में। 2019 में 2 घंटे 15 मिनट, 2020 में 2 घंटे 42 मिनट, 2021 में 1 घंटे 50 मिनट, 2022 में 1 घंटे 30 मिनट, 2023 में 1 घंटे 27 मिनट और 2024 में ये जो वोटर अकाउंट है जिसको लेखानुदान कहा गया कि ये छोटा सा बजट है 3 महीनों के लिए, ये 58 मिनट का रहा है। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अभी जो हाइलाइट्स आई हैं अंतरिम बजट को लेकर, कोई बड़ा वादा नहीं किया गया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, आयकर की जो दर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और साथ ही अगर उद्योग जगत भी कोई बड़ी ज़्यादा राहत की उम्मीद कर रहा हो तो वैसा भी कोई बड़ा ऐलान यह नहीं है। लेकिन हाँ, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने का ज़रूर प्रयास है कि 2014 से पहले आर्थिक स्थिति क्या थी और पिछले 10 सालों में किस तरह से इसमें बदलाव आया है, अर्थव्यवस्था को किस तरह से पटरी पर लाया गया। और इसके लिए एक बड़ी घोषणा ये भी की गई है कि वाइट पेपर लेकर के आया जाएगा ताकि जनता को पता लगे कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से हालात सुधरे हैं। तो हिमांशु, वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है उद्योग जगत की अगर हम बात करें तो? देखिए अखिलेश, 2 बातें। मैं इस वक्त सीआईआई के हेडक्वार्टर में हूं और सीआईआई की तरफ से 2 मुख्य सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखे गए थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है जिसको आप कैपेक्स बोल सकते हैं, वो 10 लाख करोड़ से 20% बढ़ाकर 12 लाख करोड़ किया जाए, और दूसरा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन बढ़ाया जाए। और देखिए, इसमें भले ही किसी एक विशेष स्टेक होल्डर को खुश करने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको बनाए रखने के लिए और जो कैपेक्स पर है उसे 11% के आसपास बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ किया गया है। और जो ग्रामीण इलाकों में गांव में घर बनाने का जो एक योजना है उसके तहत भी 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मेरे साथ सियाटल काउंसिल के सदस्य के चेयरमैन है अंशुमन मैगजीन। मिडिल क्लास के लिए भी एक हाउसिंग स्कीम का जिक्र किया है वित्त मंत्री ने। कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं उद्योग जगत के लिए? देखिए, ये जो बजट था इट वाज शॉर्ट एंड स्वीट क्योंकि सारी चीज़ें जो मेंशन करी बहुत पॉजिटिव थी। अब इम्प्लीमेंटेशन पे पता चलेगा क्या होगा। हाउसिंग में 2 करोड़ नए हाउसेस का जो उनका प्लान है, प्लस रूरल एरियाज़ में विमेन के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स दिया है कि उनको लोन्स मिलेंगे हाउसिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग आप बात कर रहे हैं, दैट्स अ मेजर थिंग क्योंकि द इकॉनमी रन्स ऑन मनी सप्लाई। तो जितना अभी भी आप देखें ग्रोथ है इस गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि हमारी इकॉनमी इट्स पॉजिटिव। नो डाउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे एनकरेज किया जाए, होपफुली नेक्स्ट फ्यू मंथ दैट विल कम आउट। टूरिज्म पे बात करी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंटल हाउसिंग एक ये टॉपिक है जिस पे काफ़ी टाइम से बात चल रही है। FM मेंशन्ड अबाउट रेंटल हाउसिंग बिकॉज सारी जो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है वो सिर्फ लोग खरीद के नहीं उसको वो कर सकते हैं। यू नीड टू अलाउ रेंटल हाउसिंग ऑल्सो। तो उन्होंने मेंशन करी। न्यू एयरपोर्ट्स की बात करी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में जो इतने भी अनाउंसमेंट्स है दे वर वेरी गुड। अब हमें जुलाई में वेट करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में डिटेल्स जो स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे क्या होगा। पर मिडिल क्लास के जो हाउसिंग स्कीम है इसके बारे में जितना वित्त मंत्री ने कहा उससे क्या बड़ा पिक्चर दिखाई देता है कि क्या फायदा होगा मिडिल क्लास को? देखिए, वो उन्होंने एक्चुअली डिटेल में नहीं बताया है। लॉट ऑफ द न्यू हाउसिंग विल, बट एक जो अभी जो ये है कि 2022 में काफ़ी सारे जो इंसेंटिव्स थे स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग में वो रिड्यूस हो गए या पुल आउट हो गए। फॉर एग्जांपल जो टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल अमाउंट में वो कम है। कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इज गॉन अप, कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ मनी, मॉर्गेज रेट्स हैव गॉन अप, लेकिन उसका इंडेक्सेशन नहीं हुआ जो इंसेंटिव्स में। सो वी आर होपिंग दैट गोइंग फॉरवर्ड वो इंसेंटिव मिलेगा सो दैट देयर इज डिमांड स्टिमुलेशन जो कि सिर्फ आ सकती है
अगर टैक्सेशन जो जितने भी जो सब्सिडीज उनसे कम करें, और ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, सप्लाई साइड में भी इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे सो दैट डेवलपर्स कम आउट एंड सप्लाई इन अफोर्डेबल हाउसिंग। कुल मिलाकर आपका क्या असेसमेंट है ओवरऑल? 58 मिनट का बजट, आपने कहा स्वीट एंड शॉर्ट बजट है, आपका ओवरऑल असेसमेंट क्या है? क्या एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। आई डोंट थिंक एनी सरप्राइजेस, दिस इज अ वोट एंड अकाउंट, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो दे हिट ऑल द राइट नोट्स। अब आगे पता चलेगा कि डिटेल्स क्या है और स्पेसिफिक स्टेप्स क्या लिए जाएंगे। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश, आपने देखा कि इस बजट में मुझे लगा कि अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ मोमेंटम है, जिसका जिक्र IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो उस इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए जो कुछ जरूरी है अगले 3 महीने में, उसका बहुत मुझे लगता है सोच समझकर वित्त मंत्री ने फैसला किया है। 11 लाख करोड़ का एक प्रस्ताव रखा और साथ ही ग्रामीण इलाकों में घरों के निर्माण को लेकर एक नया टारगेट बजट में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी बात ये भी दिखाई दे रही है कि चुनावी साल है, लिहाजा चाहे कोई बड़ा लोकलुभावन वादा न किया गया हो, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने का प्रयास जरूर किया गया है, ये कहते हुए कि 2014 के बाद से अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है। इसकी जानकारी देश की जनता को देने के लिए एक वाइट पेपर वो रखा जाएगा कि 2014 के पहले क्या हालात थे और अब 2024 में क्या हालात बने। हमारे एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। संजय जी, स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखेंगे अभी जो बजट आया? हालांकि अंतरिम बजट है, बजट भाषण भी बहुत छोटा, केवल 1 घंटे का था और कोई बड़ा ऐलान नहीं, आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं, तो उस तरह से देखा जाए तो एक जो परंपरा है उसको कायम भी रखा है कि कोई बड़ा ऐलान ना किया जाए। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे दरअसल। एक तो ये कि छठा है इनका FM का ये स्पीच और सबसे छोटा स्पीच है। इसके पहले का स्पीच सबसे बड़ा था, पिछले साल वाला जो था, और इनकम टैक्स में रियायत राहत नहीं दी, तो इससे अखिलेश शर्मा को खुद को कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए ये तो निराशाजनक है। मुझे 2-3 राहत की तो उम्मीद थी। हम कुलदीप सर से भी बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो राहत मिलती, क्योंकि चुनावी साल है ना, आदत लग गई है कि चुनाव आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन मोदी जी का, मैं आपके आने से पहले ये जिक्र कर रहा था सुमित को कि जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी वो एक बड़ी लाइन जो है वो खींच के रखते थे कि जो वेलफेयरिज्म है वो अलग है और साथ ही फिजिकल डिसिप्लिन है वो क्या है। रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ वो तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन हाँ, जन कल्याण हो, लोगों के हाथ में पैसा है, वो अलग बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बजट भाषण मैंने सुन करके कुछ पॉइंट मेरी समझ में आए, उसमें ये कहा जा सकता है कि बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर ये है कि अब ये जो सरकार है ये एक नई जुबान दे रही है पूरे डिस्कोर्स को, और देश को देखती है 4 जाति में। वो जात क्या है? महिला, किसान, युवा और गरीब। तो इन अ लाइटर वेन आप कह सकते हैं कि 4 जात की बात है और 400 सीट की बात है। क्योंकि चुनावी साल है तो मन की बात तो शायद यही होगी कि ये एक बजट ऐसा है जो ये मैसेजिंग दे कि हम कितना एम्बिशियस प्लान लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता रही हैं वित्त मंत्री, और उसमें देखें 2-3 डेटा मैं जिक्र करना चाहूँगा। पिछले 10 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकाला गया, या 43 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के जरिए पहुंचाए गए लोगों के पास, या 70 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घरों की मालकिन हैं। 70% महिलाएं जो भी घर मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। या एक चौथा डेटा आप देखिए कि 34 लाख करोड़ रुपए जनधन योजना से लोगों तक पहुंचे हैं। तो जो एक बड़ी चीज हुई है पूरे पॉलिटिक्स में या देश को चलाने में, वो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सेक्युलराइजेशन हो गया है। ये अब उस लेवल पर चला गया है जो मोस्ट इफिशिएंट स्कीम है। दुनिया भर में इस प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है जो लोगों तक सीधे ये फायदा पहुंचा सके। इसीलिए जो हम लोग बातूनी मिडिल क्लास हैं उनको निराशा हो जाती है कि इनकम टैक्स में राहत नहीं दी। इनकम टैक्स की राहत अब एक इस पूरे पीस का बहुत छोटा सा हिस्सा बन गया है। जॉब क्रिएशन पर देखिए, दर्जनों बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। एक का सिर्फ एग्जांपल ले लीजिए। सोलर एनर्जी के बारे में यह कहा गया है कि लोग अपने घर पे सोलर एनर्जी का सिस्टम लगा लें, जॉब क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, और जो बिजली इतनी सस्ती मिलेगी कि आपको तो फ्री में दे दी जाएगी 100 यूनिट तक के लिए। तो ये भी एक नया लेयर है बॉटम ऑफ पिरामिड के लेवल पर जॉब क्रिएशन करने का। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकाला है, 11 लाख
करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाओं पर, वो बहुत बड़ी एक्टिविटी जनरेट करेगा और वो जॉब क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इसलिए जो 7% ग्रोथ की बात है वो इससे इस बजट के जरिए, अंतरिम बजट के जरिए कैसे पहुंचा जा सके, उसका एक खाका है। और चाहती वित्त मंत्री तो बहुत सारे अनाउंसमेंट कर सकती थी जो पॉपुलर स्कीम होती हैं, जो मिडिल क्लास को पॉपुलर लगती हैं। वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्लास पहले से ही सरकार के पूरी तरह से साथ में है। अर्थ ये हुआ कि जो फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं, देश के ग्रोथ की ज़रूरत को पुश करने के लिए फोकस उस पर है। काफ़ी कुछ विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, काफ़ी कुछ इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो ये पाइएगा कि वो सारे फंडामेंटल्स अब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं जो इस ग्रोथ इंजन को ज़ोर से प्रोपेल करें। इसको कोई रोक नहीं सकता। और इन सारी चीज़ों में जो एक सेक्टर हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता था बड़े सेक्टर्स के सामने, वो था ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का। वो एक नया मुकाम देखेगा। ये वो सेक्टर है जिस पर बहुत जल्दी से काम हो सकता है। जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत जल्दी से आप होटल बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, डेस्टिनेशंस को क्लीन कर सकते हैं, लोग उसको देखने जा सकते हैं। ऐसे भी जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े हैं टूरिज्म के। 8 करोड़ लोग अगर एक तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं बनारस में, या वो आंकड़ा 13 करोड़ तक भी कहीं कहीं पब्लिश हुआ है। इससे पता लगता है कि किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है जो आपको दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज में सबसे फास्ट ग्रोथ के लिए प्रोपेल करेगी। इस बजट का थ्रस्ट यही है जिसको कि उन्होंने समराइज किया इस तरीके से कि रिफॉर्म करिए, परफॉर्म करिए और ट्रांसफॉर्म करिए। तो भारत की इकोनॉमी अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पर बड़े टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी है। ये बजट उसको और मजबूत करने के कमिटमेंट दे रहा है। जी, तो क्या आप इस बात को भी मानेंगे संजय जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इलाके में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, चाहे वो रेलवेज की बात हो, चाहे वो वंदे भारत की बोगियों को अपग्रेड करने की बात हो, मेट्रो की बात हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें जिससे जॉब जनरेशंस भी होंगे? बिल्कुल जॉब जनरेशन होंगी। जॉब के बारे में जो एक लगातार कमेंट्री आती है, जो एक क्रिटिसिज्म आता है सरकार के बारे में, सुमित, वो यही तो आता है ना कि जॉब, एम्प्लॉयमेंट और महंगाई, ये दो बातें हम लोग कोट करते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, और तीसरी बात कहते हैं कि इनइक्वालिटी। ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी है, उसी को ब्रिज करने के लिए दुनिया का सबसे मैसिव वेलफेयर और बेनिफिट प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। जहाँ तक जॉब क्रिएशन की बात है, इस पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा। आप कस्बों में जाइए जहाँ सुबह जाकर के हम मजदूरों को उठाते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर, बड़े कॉन्ट्रैक्टर, अपने घर के काम के लिए, वहाँ पर इनकी डेली की जो तनख्वाह है, इनका जो डेली वेज है, वो बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब वहाँ पर लोगों को काम की ज़रूरत है, लोगों को मजदूर चाहिए और कम मिल पा रहे हैं, इसलिए उनको वो पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन बहुत सारे लेवल पर हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम आइडियल और परफेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, लेकिन अब जो एक्टिविटी होगी, ये भारत में जितनी एक्टिविटी अभी चली है उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से तेज़ी पकड़ेगी। इसीलिए जॉब क्रिएशन भी अब यहाँ से बेहतर ढंग से होगा। और अगर एक बात जो करें, जो कि सिर पर हमेशा कहते हैं कि खतरा मंडराता रहता है, वो फिस्कल डेफिसिट का। बजट घाटा 5.6% का आकलन किया गया और लक्ष्य जो है 2026 तक कह रहे हैं कि 4.6% रख देंगे। हर सरकार ये वादा करती है और आप जानते हैं कि इसके लिए कानून भी बना हुआ है कि हमें इसको हमेशा नीचे रखना है, लेकिन अगर ये घाटा बढ़ता जाएगा तो ये सरकार के लिए कि आने वाले वक्त में दिक्कत पैदा नहीं करेगा? नहीं, देखिए, इस साल का 5.8, उसके बाद अगला साल जो होगा उसके लिए 5.1 का लक्ष्य रखा गया है, और उसके बाद वाला 26 के लिए 4.6 का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारी आइडियल सिचुएशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत खतरे की बात नहीं है। जैसा आपने खुद अभी जिक्र किया कि फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही सख्त हैं, वो सख्ती करीब करीब बरकरार रहेगी। इनफैक्ट इस बार थोड़ा रूम था कि और ज़्यादा खर्च करने के लिए अभी वित्त मंत्री बहुत सारा अनाउंसमेंट कर सकती थी बड़े नए खर्चों का, वो उन्होंने एक तरीके से नहीं किया है। सिर्फ एक इंटेंशन बता दिया है कि हम कितने एलोकेशंस को बढ़ाने जा रहे हैं जो बड़े ग्रोथ पिलर्स हैं उनके लिए। तो ये कोई बहुत फिक्र की बात नहीं है, ग्रोइंग इकोनॉमी में इतना मैनेज हो सकता है, लेकिन हाँ, ये हमारे आइडियल सिचुएशन से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन कैपेक्स की आप जो बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की, एक इरादा उन्होंने जाहिर कर दिया, और इसमें भी वो आंकड़ा एक देते हैं कि जब यूपी की सरकार थी तब क्या था और अब कितना हमने कर दिया। 4 लाख करोड़ से बढ़ा करके 11 लाख करोड़ कर दिया है।
तो यहां पर भी वो कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, तो इस पर एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से हो रही है कि तब क्या हालात थे, अब क्या हालात। तो व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है जो मेरा क्रिब अगर मैं इसमें कहूं तो वो एक है, और हो सकता है कि सरकार आगे करे, सरकार का इंटेंट है लेकिन वो काम ठीक से वो कभी कर नहीं पाई है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट वाला, प्राइवेटाइजेशन वाला। तो 3 क्रिटिकल मुद्दे हैं जो हम कहते हैं ना कि हमको 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है और हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो ऐसे ही बन जाएंगे हमारे नॉर्मल ग्रोथ पे। लेकिन दरअसल भारत को एक इक्वल मिडिल इनकम कंट्री बनाने के लिए जिस पर कैपिटा इनकम की जरूरत है उसके लिए 7 नहीं 9% ग्रोथ की जरूरत है। कम से कम 9% हो तो वो खुशहाली हमारी अगली वाली जनरेशन ठीक से देख पाएगी, भोग पाएगी। उसमें 3 जो बड़ी चीजें हैं हमको लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत है और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज हैं। नंबर 1 प्राइवेटाइजेशन। अभी जो सपोर्ट इस सरकार के लिए है उसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई फिक्र करनी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के पब्लिक मूड नहीं है। पब्लिक मूड बिल्कुल एक तरफ कैपिटलिज्म के पक्ष में है तो दूसरी तरफ सोशलिज्म के पक्ष में है, और उसके बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप चाहें तो प्राइवेटाइजेशन पे अग्रेसिव हो सकते हैं जो ग्रोथ को पुश करेगा। दूसरी 2 चीजें और हैं, वो है लैंड और लेबर। यहां पर एक कॉशन, एक सहमापन है, पॉलिटिकल कारणों से है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भी अभी इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी, इतना ज्यादा ट्रस्ट कैपिटल है इस सरकार के पास कि वो चाहे तो बहुत आसानी से इन 3 बड़े क्रिटिकल मुद्दों पर काम कर सकती है। ये मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का WIP है या थोड़ा पेंडिंग एरिया है। तो क्या ये मान के चले संजय जी 2024 के बाद, जो कि प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट थे, कल जो उन्होंने अपना संसद के पहले भाषण दिया उससे लगा कि वो 24 में आने की तैयारी पूरी है सरकार की, उसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं था, आश्वस्त थे। तो ये जो 3 क्रिटिकल एरिया आपने बताया, प्राइवेटाइजेशन, शको शुबा नहीं था, लेकिन अब मेरी एक फरियाद है, मेरी एक प्रॉब्लम है जी, वो ये अखिलेश की चुनाव कितना बोरिंग हो गया है। प्रेडिक्टेबल हो गया है। 300 की 400 ये वैसे बजट और अर्थशास्त्र की बात हो रही है। मीडिया वो सेक्टर है जिसमें सरकार की मदद की जरूरत है। सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट हमको करना चाहिए। हमको TRP चाहिए होती है चुनाव में, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जो इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है। बिल्कुल, हमारी रोजी रोटी का ध्यान रखें। मेरा सवाल सर आपसे था, वो मैं चाहूंगा उस पर जरूर अंडरलाइन करिए आप। प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आपने छुआ। सरकार के पास मैंडेट है 10 साल से, 273, उसके बाद 303, और अब राम मंदिर की हवा, माहौल देश का जो दिख रहा है। क्यों प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकारें सेंसिटिव रहती हैं, क्यों उस चीज को छू नहीं पाती हैं? एक समय था जहां पब्लिक मूड में आप उनको गरीब कह लें, वर्कर कह लें, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों को कह लें या मिडिल क्लास को कह लें, उनको थोड़ी सी आशंका थी जिसको दूर करने में वक्त लगा। लेकिन जो लोग इन मुद्दों को उठा रहे थे उनकी जुबान, पॉलिटिकल जुबान अब इतनी पुरानी है, इतनी ऑब्सोलेट हो गई है कि वो खुद को मार्जिन के, हाशिए के बाहर कर चुके हैं, इररिलेवेंट बना चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार भी शायद कहीं कॉशियस है कि इसको लेकर के पब्लिक सपोर्ट नहीं है। मेरा मानना है जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट है, लेटेंट पब्लिक सपोर्ट है। आप करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। शायद अगले चुनाव के मैंडेट के बाद ये होगा, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल। और साथ ही जो मिडिल क्लास की हम बात करें कि ठीक है कि इनकम टैक्स का स्लैब है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन संजय जी ये भी ऐलान किया गया है कि जो घर हैं, जो उनका एक सपना होता है हर व्यक्ति का कि हमारा घर अपना हो, उसको पूरा करने के लिए सरकार एक योजना लेकर के आएगी। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके घर तो बढ़ाएंगे ही, साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी एक योजना की बात कही गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पूछा। देखिए क्या है कि ये सरकार जो है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस इसके बड़े तेज और चपल होते हैं। वो ये कि अब चूंकि माइग्रेशन बहुत हो रहा है, लोग दूसरे इलाकों में मूव कर रहे हैं, बड़े शहरों में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में मूव कर रहे हैं, और ऐसे में घर, रेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 महंगी चीज़ें हैं जो कि हम और हमारा वाला जो परिवेश है उसमें लोग महसूस करते हैं। तो अब गरीबों का घर बनाने के बाद लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को अफोर्डेबल हाउसिंग दी जा सके, इसके लिए भी एक थोड़ा सा बोल्ड, साहसी काम करने की ज़रूरत है और उसको वित्तीय सहायता की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये टाइमली है, जबकि ये अब एक, ये कहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का
एडिशन 2 होगा, जो मिडिल क्लास के उन लोगों के लिए होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो एबल बॉडीड वर्क फोर्स हैं और उनको घर की ज़रूरत है। तो वहाँ ये सहयोग आएगा, क्योंकि अभी तक ज़मीन को लेकर के उसको खोला नहीं गया था, जबकि ज़मीन है हिंदुस्तान के बड़े शहरों में और उसके आसपास। लेकिन अब वो शहर बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का दायरा हो रहा है। ऐसे में इस एक्टिविटी का बिल्कुल ये वेल टाइम्ड है कि इसको पूरा सपोर्ट किया जाए, ताकि हाउसिंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत तेज़ी से काम करती है। क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग में वक्त लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़ा पीछे हो गए, इसीलिए अब कोशिश ये है कि जो सर्विसेज हैं वो, और दूसरी तरफ हाउसिंग से लेकर टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पे ज़्यादा जोर लगा दिया जाए, तो इसमें रिजल्ट जल्दी आता है। आपने जो बात कही कि 9% की ग्रोथ होनी चाहिए, आपको लगता नहीं कि ये सिर्फ 4 साल या 5 साल या 10 साल के लिए, बल्कि कई दशकों तक आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप जो गरीबी में लोग हैं इनको बाहर ला सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो $10,000 पर कैपिटा इनकम का एक आदर्श लक्ष्य होना चाहिए, जो बहुत दूर है, उसके लिए 9 से 10% का अगर एक ग्रोथ हमारे अगले 10-15 साल तक मजबूती से हो जाए, तो वो बात बनेगी जो हमारी ख्वाहिश है। एक चीज़ और बताइए सर, आप क्योंकि सब चीज़ समझते हैं, मार्केट भी समझते हैं, सेंसेक्स बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अभी रेड में दिखाई दे रहा है, अभी जो सेंसेक्स था वो ग्रीन में था, निफ्टी रेड में था। ये जो फ्लक्चुएशन है ये किस लिए है? ये मोमेंट्री है या बड़ा इम्पैक्ट है? कैसे समझे? जनरली बहुत कम सरकारें ऐसी होती हैं, और ये सरकार तो बिल्कुल भी नहीं, जो बजट बनाते वक्त मार्केट का या सेंसेक्स का ध्यान रखे। इसलिए मुझे लगता है कि वो मार्केट जो है, ये जो सोचता है कि कोई एक ऐसा बूस्टर डोज, एक बड़ा वाला अनाउंसमेंट आ जाए जिसको लेकर के अभी 1500 ऊपर हो जाए, ये बजट उस टारगेट ऑडियंस के लिए है ही नहीं। वो तो जब कॉर्पोरेट टैक्स का उन्होंने किया था तब रॉकेट बना था। बिल्कुल, चुनाव नहीं, उस पर कहा इन्होंने, लेकिन वो पुरानी बातें हैं तो ये लोग सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30% से घट करके 22% पर आ गया है, उसका वो फायदा ले चुके हैं। अब सोच रहे थे कि आज कोई बहुत बड़ा वैसा अनाउंसमेंट आ जाए जो डायरेक्ट मार्केट इंपैक्टिंग हो, तो शायद वैसा नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारी वो बातें हैं जो मार्केट जब धीरे धीरे रीड करेगा तो वो ढूंढेगा नए नए सेक्टर कि यहाँ पर ग्रोथ होनी है, यहाँ काम होना है, और फिर वो इसको प्रोपेल करेगा। जैसे स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है इसमें कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है? स्टार्टअप अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्टार्टअप में बहुत अच्छी खूबसूरत सफलता की स्टोरीज भी हैं, प्रॉब्लम एरियाज भी हैं, इसलिए वहाँ पर अभी स्टार्टअप में भी एक प्रकार का जो मेनस्ट्रीम बिजनेस के बारे में अप्रोच होता है, चीज़ों को मजबूत बनाने का और क्लीन करने का, वो ज़रूरत स्टार्टअप में भी अब लगेगी। कि शुरू में हम थोड़ा सा इसमें रोमेंटिसाइज ज़्यादा कर रहे थे, अब थोड़ा रियलिटी चेक हो रहा है। कुछ बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल सामने आए हैं जिनको हम लोग आइडियल मानते थे, तो अब थोड़ा सा वहाँ पर एक कॉशन बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टअप को जो हम देखते हैं ना, हमेशा सिर्फ टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन स्टार्टअप का दूसरा 2 पक्ष और है जो शायद नॉन टेक है, जो ब्रिक एंड मोर्टार से जुड़ा हुआ है, जो ओल्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और जो सर्विसेज से जुड़ा हुआ है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है। उसमें हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है। दरअसल वो काम हो रहा है, वो भी किसी अम्ब्रेला के नीचे ला करके उसकी ब्रांडिंग या एग्रीगेशन नहीं हो पाई है, इसलिए हमको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए संजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं इस आज के बजट की, आज के वोट ऑन अकाउंट की 3 हेडलाइंस, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 के चुनाव 2 महीने के बाद होने जा रहे हैं, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, कैसे रेट करना चाहिए आउट ऑफ 10? जैसा मैंने कहा कि चुनाव का और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, दोनों का एक सेक्युलराइजेशन इन द अदर मीनिंग ऑफ द टर्म वो हो गया है। तो इसका हेडलाइन एक ही है सुमित, 4 जात 400 सीट की बात। हालांकि कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान जिसको कहा जाए उस तरह का किया नहीं गया संजय जी, की जिससे कि लोक लुभावन जिसको कहा जाए कि आपको याद होगा यूपीए के टाइम पर 2009 में घोषणा कर दी गई थी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए। इवन पीयूष गोयल ने, आपको याद होगा कि कुछ टैक्स स्लैब में टिंकरिंग उस तरह से किया था। जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि अब आपके बेनिफिशियरीज, लाभार्थी बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं, वेल आइडेंटिफाइड हैं, और आप उन तक पहुंच पा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम और है कि हम लोग मीडिया में इश्यूज को तब मानते हैं जब वो हेडलाइन साउंडिंग हो। हो सकता है चीजें हेडलाइन साउंडिंग ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो, और वो हम लोगों को कई बार लगता है कि ये रूटीन बात है, स्कीम का
एक्सपांशन है या एक्सटेंशन है या थोड़ा उस पर और वैल्यू ऐड हो गया है, इतना ही है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि उस तरह की हेडलाइन इस बजट में भले ही ना हो, लेकिन एक हेडलाइन मेरे लिए है जो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वो ये है कि हिंदुस्तान की जो एम्बिशंस हैं और जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए, लोगों को काम देने और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ये सरकार बड़ी फोकस्ड है। और वो मुझे लगता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हैं। जो बड़े ग्रोथ की बात है ना, वो मैंने कहा कि वो कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं और वो क्रिटिकल इश्यूज हैं, वो शायद सरकार इस मैंडेट के बाद, चुनाव के रिजल्ट के बाद जब वापस आएगी तो उसको एड्रेस करेगी। हैशटैग बजट विद एनडीटीवी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमको भेजते रहिएगा। हमारी वेबसाइट पर, हमारे ट्विटर हैंडल्स पर लगातार वो चल रही हैं। संजय पुगलिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपने बड़े आसान, नहीं ऐसे नहीं आ सकते ऐसे। अभी एक सवाल और, जो आपने आते से ही बाउंसर मारा था अखिलेश के लिए, वो मैं बाउंसर पलट कर आपको फेंक रहा हूं। आपको रियायत नहीं मिली टैक्स स्लैब्स में, अब आप क्या कहेंगे एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते? क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि कुछ रियायत मिलेगी, चाहिए थी आपको? इसमें तो मैं अखिलेश के साथ हूं। दुखती रंग। तो सबको रियायत चाहिए, सबको राहत चाहिए। सरकारों की तरफ आदमी इसीलिए उम्मीदों की नजर से देखता है कि आने वाले वक्त में शायद कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे उनकी जेब में निजी तौर पर उनको कुछ फायदा हो। लेकिन आपको देश का विकास भी करना है, आपको 140 करोड़ की जनता के बारे में भी सोचना है, और फिर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई ताकत है वहां पर भी अपनी छाप बनानी चाहिए। ये देखिए नई तस्वीरें हैं। निर्मला सीतारमन स्पीकर ओम बिरला जी के साथ बैठी हुई हैं और शायद बजट भाषण के बाद की तस्वीरें हैं। स्पीकर चेंबर में इस वक्त तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मुलाकात ये हो रही है। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, वो भी हम आपको सीधा सुनवाएंगे। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की मुलाकात है, देखिए घड़ी का जो समय वो 12 बजे बता रहा है, तो जो बजट पेश किया गया उसके बाद जाकर के मिली है। और ये एक कस्टमरी, एक जिसको कहा जाए कि परंपरा है जिसमें मुलाकात होती है। सुबह भी आज हमने देखा था कि पूरा जो उनका कार्यक्रम था, राष्ट्रपति के पास गई, उसका कैबिनेट की मीटिंग हुई, बजट का भाषण दिया, और उनकी साड़ी के ऊपर भी आप सुबह से चर्चा कर रहे थे रंग को लेकर। बिल्कुल, नीला रंग की साड़ी पहनी हुई थी। नीला रंग किसके लिए इस्तेमाल होता है राजनीति में हम सब जानते हैं। बिल्कुल। वैसे अब हम लोगों को एक काम करना चाहिए प्रोग्रामिंग के नाते, कोई भी बजट भाषण या बड़ी चीज़ें होती हैं और अभी प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, तो देखना ये चाहिए कि किन इलाकों के नाम जी, किन अलग अलग सेक्टर्स के नाम क्या क्या लिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर लड़कियों के लिए उसका संबंध किस इलाके में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिशरीज़ को बढ़ाने की बात है तो किस इलाके के लिए है, या लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप क्या महत्व है। तो आप स्थानों को या ये जो एलिमेंट्स हैं इसका नाम बनाएंगे तो उससे भी आपको वोटर टारगेटिंग का पता चल जाएगा। बिल्कुल। और जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, उनमें उनको भी आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिले, ये भी एक घोषणा की गई। हालांकि आयुष्मान का लोग उम्मीद कर रहे थे इसको 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाएगा, वैसे ही कोई बात हो ही नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थिति अभी ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहां से मीन मेक निकालेंगी, उनको कहां से लूप होल्स मिलेंगे और वो इस पर टिप्पणियां करनी चाहेंगी, इस बजट भाषण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी। एक चीज और था अखिलेश जी, आपको याद होगा 2019 में जब आया था पीयूष गोयल साहब जो वोटर अकाउंट लेकर आए थे, तब तक चुनावी माहौल बन गया था देश में, और इसीलिए उन्होंने ऐसी तमाम चीजें की थी उस वोटर अकाउंट में जिसको हमने कहा कि चुनावी भाषण ही था पूरा। और वो करीब 1-1.25 घंटे का भाषण था, बड़ा भाषण था। टैक्स स्लैब्स में चेंज हुए थे, किसान निधि की अनाउंसमेंट उसी में हुआ था, 6,000 रुपए जो मिलते हैं किसानों को आज भी, हम जिसपे उम्मीद कर रहे थे कि आज बढ़ जाएगा, वैसी चीजें आज नहीं दिखाई दी। उसकी वजह शायद ये है कि अब इस बार सरकार ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, यही बात जो हमने शुरुआत में भी कही थी, और संजय जी से भी ये सवाल पूछूंगा कि क्या आपको लगता है सर ये देख करके कि सरकार आश्वस्त है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई घोषणा नहीं है जिसको कोई लोक लुभावन बात कही जाए, वो कुछ नहीं है, तो कोई नई बात उन्होंने हट करके की नहीं। ये सवाल आपसे मैंने पहले पूछा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 जात 400 सीट वो फार्मूला और ये संदेश निकलता है, तो इतना कॉन्फिडेंस का इसका क्या कारण है? क्योंकि ये अमूमन होता है कि 10वां साल जब आता है, 9वां साल होता है, तो सरकारें लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आ जाती है कि लगता है कि शायद अब दोबारा ना, और पैनिक में आकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। नहीं, बिल्कुल मोर देन आश्वस्त है सरकार। दूसरी बात यह है, जैसा कि मैं एम्फेसिस दे रहा हूं बार बार, कि वो हेडलाइन हम लोगों को क्या चाहिए इसकी फिक्र नहीं है। इनफैक्ट वो हेडलाइन भले ही ना हो, लेकिन इस बजट में या जो लगातार सरकार का काम चल रहा है उसमें जो रिफाइनमेंट है, जो प्रिसीशन है,
वो कमाल का है। इनफैक्ट मुझे वो बड़ी हेडलाइन दिखती है, लेकिन हाँ वो क्या है, बारीक बातें हैं कि आप कैसे टारगेटिंग कर रहे हैं स्कीम्स की, किन इलाकों में कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम बार बार सुन के बोर हो चुके हैं, लेकिन जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो मैं बहुत चौंकता हूं, क्योंकि उसके फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। न सिर्फ वो रिमोट इलाकों के बैकवर्ड जिलों को ऊपर उठाने की बात है, उसके अलावा उसके साथ बहुत सारा काम होता है जो कोई भी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये रिफाइनमेंट और अल्ट्रा प्रिसीशन टारगेटिंग ऑफ वोटर्स का बजट है। बिल्कुल। तो जाहिर इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब किसी भी पल जब प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आने वाली होगी, प्रधानमंत्री का एक रिएक्शन आता है हमेशा की तरह वित्त मंत्री के भाषण के बाद, अब किसी भी वक्त उम्मीद करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बजट पर अपनी एक प्रतिक्रिया देश की जनता को जरूर देना चाहेंगे कि कैसा बजट रहा, क्या बजट रहा। एक चीज़ और, जो आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं संजय जी, उसमें मैं थोड़ा सा राजनीतिक चश्मे से देखते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा, विपक्ष भी तार तार हो गया है। जो विपक्ष जून 2023 में एक लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पर था कि सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, 1 to 1 का मुकाबला होगा, 1:1 का, वो अब तार तार है। जेडीयू इधर आ गया है, जो नीतीश कुमार सूत्रधार थे वो अब आज बजट की तारीफ करेंगे जाहिर तौर पर। अब ममता बनर्जी कांग्रेस को सीटें नहीं दे रही हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच असल साफ तौर पर सुनाई दे रही है। इन परिस्थितियों में आपको लगता नहीं है कि ये 400 सीट का जो सपना है, जो आप 4 जात और 400 सीट बोल रहे हैं, वो बीजेपी इसीलिए भी कॉन्फिडेंट और सुनाई देती है? आप ऐसा कह सकते हैं, और इसके लिए आप इस सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये विपक्ष की समस्या है कि वो सरकार की आलोचना की भाषा, उसके बाद आपको मैं क्यों देखूं, आपको क्यों वोट दूं, आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, ये कहने की क्षमता, और फिर आपके समर्थक जो हैं उसको बूथ तक ले जाने की क्षमता। जब ये तीनों ही सवालों के कटघरे में हैं तो आप क्या कर सकते हैं? हम लोग एज अ चैनल, सभी लोग, चूंकि एक बैलेंस और संतुलित पत्रकारिता करनी होती है, तो विपक्ष की मदद करने की बड़ी कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट बॉदर। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं इस अंतरिम बजट पर, आइए सुन लेते हैं। She talked frankly about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. असली बजट तो जुलाई में आएगा, इंटरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। सुना आपने विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं। क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के अखिलेश बहुत माल मिला नहीं शशि थरूर को और फारूक अब्दुल्ला साहब को। इस पर अरुण जेटली जी जो है एक बड़ा चुटकी लिया करते थे संजय जी, वो ये कहा करते थे कि हम जब विपक्ष में थे और जब माइक लगा कर लोग पूछते थे टीवी वाले कि क्या है बजट के बारे में क्या कहेंगे, तो अटल जी हो या बड़े नेता हो तो वो कह दिया करते थे ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वो एक कुछ रटे रटाई बातें होती जो विपक्ष हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो करती है। बिल्कुल। तो इसमें यही उसी का मान के चला जाए कि इस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। लेकिन एक सवाल मैं आपको जाने से पहले संजय जरूर पूछूंगा, लक्षद्वीप का आपने खास तौर से जिक्र किया, इसका बहुत निहितार्थ है इसके भी। आपने कल विदेश मंत्री जी का इंटरव्यू भी किया था, आपने उनसे प्रश्न भी पूछा था, और लक्षद्वीप हो मालदीव हो, ये जो जिस तरह से एक पूरा विवाद चल रहा है, और लक्षद्वीप का नाम लेना और उस समय जब नाम लिया तब सांसदों का मेजे थपथपाना, ये भी एक बड़ा संदेश है।
बिल्कुल। तो जिस चीज़ पर अगर आप ध्यान दें कि अयोध्या के 22 जनवरी के पहले प्रधानमंत्री ने अपना ज़्यादातर वक्त महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में गुजारा और उसके पहले लक्षद्वीप की घटना हुई, तो वही अल्ट्रा प्रिसीशन टारगेटिंग, फाइंडिंग न्यू एरियाज, न्यू टेरिटरीज, न्यू कैचमेंट एरियाज। तो अब चूंकि आपने चर्चा छेड़ी दी है और हम लोगों की एक बीमारी है ना कि वी विल स्टिक आवर नेक आउट डिस्पाइट बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग अगेन एंड अगेन और मे बी राइट सम टाइम। तो उसमें यह है अखिलेश कि दक्षिण भारत में हम कहते थे ना बीजेपी यहाँ पर नहीं पनप पाएगी, इसके चैलेंजेस हैं। उसमें केरल और तमिलनाडु दो बड़े ऐसे राज्य माने जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार का इनका जो आउटरीच है साउथ में, बीजेपी को सिग्निफिकेंट फायदा उसका वोट शेयर के टर्म पे होगा, जिसको कहते हैं ना कि अपनी एक दुकान खोलना, सिग्निफिकेंट लेवल पे काउंटर ओपन हो जाना। तो मुझे लगता है कि साउथ का जो आउटरीच है वो बहुत ही वृहद है और ये अयोध्या के इर्द गिर्द राम जो हैं साउथ में एक अलग ढंग से देखे जाते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात टूरिज्म की है। चौथी बात जो मैंने बहुत हल्के में जिक्र की और ये किसी दिन लंबे विचार का विषय है कि इस वक्त केरल में ब्लू कॉलर मजदूर नहीं मिलते। तो वहां पर ब्लू कॉलर मजदूर कौन है, कहां से गया हुआ है? नॉर्थ से गया हुआ है। ये जो माइग्रेशन हुआ है और नॉर्थ और साउथ में एक कमाल का इंटीग्रेशन हुआ है, वो हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया के रेडार से बाहर की चीज है। ये 20 साल से हो रहा था, 10 साल से और तेजी आई, 5 साल में और तेजी आई। इस वक्त गल्फ में जो लोग जाते हैं वो केरल से नहीं जाते, वो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान से जाते हैं। तो भारत के भीतर का जो माइग्रेशन है वो एक अलग स्टोरी है जो एक अलग ढंग से चीज़ों को जोड़ रही है और इन नए ट्रेंड्स को जाहिर है कि मोदी जी समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है वो एक सिंबल है साउथ के उनके मैसिव आउटरीच का। यही कारण है कि इस साल की जो शुरुआत भी उन्होंने वो तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे से की थी। एब्सोल्युटली। और 2 और 3 हफ्ते के अंदर 3 बार वो साउथ का दौरा भी कर चुके थे। तो ये अपने आप 400 पार अगर करनी है तो दक्षिण में तो इनरोड्स बनाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के दक्षिण, इसीलिए वो 400 पार का सपना वहां से भी पूरा हो सकता है। बिल्कुल। अब हम लोगों को ऑन अ सीरियस नोट वायनाड का दौरा करना चाहिए। हालांकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री सुमित शुड गो एंड कवर इट। आपने असाइनमेंट दे दिया मेरा अगला सबके सामने। राहुल गांधी की नॉर्थ में रहेंगे, हम साउथ चले जाते हैं उनके इलाके में। आप मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुलदीप जी भी आलोक बसुवासा जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपसे बड़ी उम्मीदों के साथ हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कुछ उम्मीद होगी, अब बजट भाषण हो चुका है, आपकी प्रतिक्रिया क्या, कैसा लगा, कैसा है और क्या खास है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल से जैसे कि संजय जी ने भी बोला, फोकस उनका बड़ा क्लियर है। जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देना है, जो गवर्नमेंट की जो उन्होंने जो स्कीम शुरू की हुई है उनके ऊपर वो वैसे का वैसे ही वो चलते जा रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें ये थी कि जो फिस्कल डेफिसिट है 5.8, जिसको कि वो 5.1 के ऊपर जो लेके आए हैं, मेरे ख्याल से उसके ऊपर उन्होंने अपना फोकस को छोड़ा नहीं है। और हाँ, लेकिन ये जरूर निराशा का विषय है, जो मिडिल क्लास थी जो टैक्स पे कुछ महसूस कर रहे थे कि थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन का या EMI का जो इंटरेस्ट हाई रेट का जो उनके ऊपर प्रेशर है कि कुछ उस पर रिलीफ मिलेगा, उनको नहीं मिला। पर मेरे ख्याल से हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी 2 महीने के बाद जुलाई में दोबारा बजट आएगा तो देखते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन एक चीज जो वित्त मंत्री जी ने बड़ी अच्छे से कही कि जो पिछले 10 सालों में जो अचीव किया है, जो टैक्स सिंप्लीफिकेशन किया है, और एक जो उन्होंने जो प्रावधान लेके आए हैं कि जो डिस्प्यूटेड डिमांड है 25,000 रुपए तक की 2009-10 तक की, उसके बाद 2010 से 2014-15 तक 10,000 तक की, उनको वो डिलीट कर देंगे, तो उसके लिए वो परस्यू नहीं करेंगे। तो इससे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और एक चीज उन्होंने और अच्छी जो गिनवाई की, जो टैक्स प्रोसेसिंग टाइम है पिछले 10 सालों में, और वो सिर्फ रिटर्न प्रोसेस अब 10 दिनों में आ गया। और मेरे ख्याल से इस साल की जो रिटर्न लोगों ने फाइल किया तो कई बार तो रिफंड आपको अगले दिन ही आपके अकाउंट में आ गया। तो मेरे ख्याल ये कुछ अच्छी बातें हैं। तो हमें और मतलब ये देखना पड़ेगा कि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट भी है उन्होंने इस बार जो 26 लाख करोड़ मिल गया है और अगले बार का जो 30 लाख करोड़ रखा है, तो फिस्कल डिसिप्लिन पे खासकर उन्होंने इसका ध्यान दिया है। GVR शास्त्री प्रोफेसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। शास्त्री जी, आपके पास आऊं, आलोक बस भी मेरे साथ है, लेकिन पहले शास्त्री जी मेरा सवाल आपसे है। करीब 1 घंटे का वोट ऑन अकाउंट, कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं, जिस तरह की बातें की जा रही थी, कैसे लगा आपको ये बजट, क्या कहेंगे शास्त्री जी?
देखिए, ये हमारा जो देश है, इस देश को मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बेस पे फर्स्ट टाइम ये दिखने के लिए मिल रहा है पिछले 5 साल या 10 साल से जो मोदी जी सरकार आए थे, एक लीडरशिप इकोनॉमी ड्राइव कर रही है। इट इज डिविएटिंग फ्रॉम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इट इज नॉट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। रुकिएगा शास्त्री जी, एक मिनट रुकिएगा, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी साहब। और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। सुना आपने, नितिन गडकरी को बजट के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, अच्छा बजट बताया निर्मला सीतारमन को। जी शास्त्री जी, अपनी बात पूरी करिए 30 सेकंड में। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिक्स्ड इकोनॉमिक बेसिस पे जिस तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था बनाई गई, जो 75 साल तक चलती आ रही थी, जो पिछले 10 साल से जो डायनामिक्स एमर्ज हो रहा है, जो मोदी जी कर रहे थे, वो शायद किसी को समझ जल्दी आएगा नहीं। एक्चुअली चाहे जापानीज हो, कोरियंस हो, यूके हो, चाहे यूएस हो, जो लीडरशिप इकोनॉमी जो वो होता है, ये ग्रोथ इकोनॉमी की फंडामेंटल्स पे चलती है, जो कंप्लीटली नया है हमारे, क्योंकि वो कंप्लीट नया की वजह से लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। मैं एक बात को कह सकता हूँ, ये साफ साफ कह सकते हैं, ये लीडरशिप इकोनॉमी ड्राइव हो रहा है। इसके लिए वर्थ एंड वैल्यू, 2 आइटम होते हैं, एक वर्थ होता है, एक वैल्यू होता है। क्योंकि पिछला जो भी बजट चलते आ रहे थे, उसमें कहीं वर्थ नहीं दिखता था, वैल्यू दिखता था। लेकिन अब जब वर्थ वैल्यू से जुड़ जाता है, एक लाइन में बोलूं तो आपको बजट समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए, अगर मैं आपकी बातों को सम अप करूं शास्त्री जी। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड समझाना चाह रहा था। इस तरीके से टिप्पणी वाली नहीं थी, पूरा बैकग्राउंड था जो कंप्लीटली टेक्निकल। एक लाइन में, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत से मेहमान रिएक्शंस आते जा रहे हैं शास्त्री जी, मैं मजबूरी, बार बार आप बोलेंगे, बार बार मैं टोकूंगा, बार बार हम किसी और फीट पे जाएंगे। अगर आप आसानी से एक शब्द में कह दें कि बजट आपको कैसा लगा, अच्छा है कि नहीं है? बजट के अंदर एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों है। लेकिन ऐसा है कि एक रास्ता जो तय किया था, जो लीडरशिप इकोनॉमी का, वो क्लियर विजिबिलिटी है। इट इज। आलोक जी के पास आना चाहूंगा। आलोक जी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। हमने सुना शशि थरूर को, फारूक अब्दुल्ला को, अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं कि जो जनता विरोधी बजट देने का रिकॉर्ड है मोदी सरकार का, उसको कायम रखा गया है और ये बजट जो है ये एक्चुअली विदाई बजट है, इसके बाद अभी सरकार वापस नहीं आई है। देखिए अखिलेश जी, विपक्ष तो ऐसी भाषा बोलेगा ही, पहले भी लोग ऐसे ही बोलते रहे हैं हर बजट पे। लेकिन अभी जो बात चल रही थी कि ये पॉपुलिस्ट बजट क्यों नहीं था, उसका मेन कारण है कि धरातल इतना ठोस बन चुका है। जो भी 400 की 4 जाति और 400 की बात हो रही थी कि कोई पॉपुलिस्ट बजट लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिन तरीके से इस पर देखा गया, अभी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, रियल एस्टेट सेक्टर तो सबसे ज्यादा प्राइवेट हाथ में है और उसमें एक बूस्ट आया हुआ है, एक इजाफा है उसमें अभी की स्थिति में। और जो इन्होंने रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाया है, जिससे सीमेंट और सरिया इस सब को ढोने में अगर दाम की कीमतों में कमी आएगी तो ये और बूस्ट करेगा उसको। और दूसरा, आपने एक चीज देखा कि रिलीजियस टूरिज्म विगत 1 साल के अंदर इतनी बड़े पैमाने पर बूस्ट लिया है इंडिया में। आई एम टोल्ड, आई डोंट नो वेदर इट इज अ करेक्ट फिगर और नॉट, कि काशी विश्वनाथ में गोवा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं पिछले साल। तो उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। अयोध्या में कोई होटल में कमरे नहीं मिल रहे थे कुछ दिन पहले। तो इन सब चीजों पर भी जो फोकस आया है, वहां की लोकल इकोनॉमी भी बहुत बूस्ट हुई है। जो वहां पर अयोध्या के इर्द गिर्द, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो फूल बेचने वाले थे वो सब मुसलमान हैं,
जो 200 रुपए के फूल बेचता था वो आज की डेट में 25,000 के फूल बेच रहा है। जी, हमारे साथ आलोक जी, रोक रहा हूं बीच में, माफी के साथ, फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी अजय दुआ जी भी जुड़ गए, वाणिज्य सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में। दुआ साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने अभी ये वोटर अकाउंट सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कैसा लगता है भारतीय ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ये आपका सरकार का लेखानुदान? जो भारत जिस पथ पे है, 7% रेट ऑफ ग्रोथ, अभी भी जब दुनिया में इतनी अड़चन वगैरह हैं, कि उसके लिए ये जो बजट आया है बिल्कुल मेरे हिसाब से अनुकूल रहेगा। ये उसको आगे लेके जाएगा। और जो जैसे बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन का भी बात किया गया, भाई 5.8 या 5.9 से हम इस बार ही 5.1 पे आ जाएंगे, एक साल के बाद या 2025-26 में हम 4.5 पे आ जाएंगे। पर मेरा इसके साथ ये मुझे बिल्कुल लगता है कि मुमकिन है कि ये फिस्कल डेफिसिट हम कम कर पाएंगे। कारण अभी तक जो कैपेक्स में सरकार लीड ले रही थी, और सरकार जिस तरीके से कुछ पैसे दे रही थी स्टेट्स को भी आगे ले जाने के लिए, अब जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा और उनका एक्सपेंशन बढ़ेगा ही, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाउसिंग के लिए ज्यादा तरतूद की गई वगैरह है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए डिमांड बढ़ रही है, तो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वो कैपेक्स आएगा, तो इसलिए पैसा उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी फिक्र रहती है हर बारी जब बजट बन। लेकिन अजय जी, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो 7% की बात कही गई है सरकार की रिपोर्ट में भी, क्या आपको लगता है कि ये काफी है? हालांकि मैं जानता हूं कि ये बाकी सारे दुनिया में अगर देशों से तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए क्या 7% काफी है? आपको लगता है कि ये 7 से भी ज्यादा होना चाहिए? और इसके लिए सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, प्राइवेटाइजेशन करें, और साथ साथ जो बातें कही जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो भी लगता है कि वो उस पटरी पर नहीं जा रहा, उस तेजी के साथ नहीं जा रहा है। इस तरह की बाधा भी आपको देखने को मिल रही है। अखिलेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमने अपना पर कैपिटा इनकम डबल करना है, विकसित देश तक के लेवल तक पहुंचना है, हमें चीन जैसे 7 नहीं 10% के ऊपर ग्रोथ करनी पड़ेगी, और वो ग्रोथ हमारे यहाँ जीडीपी की 25 से 30 साल के लिए चाहिए, तभी आप उस लेवल पे स्तर पे पहुंच पाएंगे। अब ये कहना आसान है कि कितना होना चाहिए, आपको वास्तविक स्थिति देखनी है। आप ये सब कुछ कर रहे हैं लोकशाही के मार्फत, आप कर रहे हैं ये जहां पे फेडरल सेटअप है, निर्णय बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स लेंगी, और लोकशाही में हो सकता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि स्टेट्स और सेंटर हमेशा ही एक ही दृष्टिकोण से चीज को नहीं देखते, हर एक का अपना वहां का स्थानिक प्रॉब्लम होता है, उसको पहले प्राथमिकता देते हैं। तो वो देखते हुए 10 ना भी हो, जरूर हमें हर साल 7 से 8% ले जाना, 5 साल बाद 8 से 9% ले जाना, वो करना मुमकिन है। और उसमें जैसे कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर जरूर आगे ले जा सकता है जल्दी से पब्लिक सेक्टर के, पर हमने उसलिए जो उनको जो इंसेंटिव देने हैं, उत्तेजन करना है, वो सब इस बजट में के अलावा हर साल करना पड़ता है। आपने जो कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने ढांचा तैयार कर लिया है पहले 8-10 साल में, अब अगले 8-10 साल में आपको जाके उसकी डिटेल्स और जो आपने सीखा, हमने सीखा, जो दूसरे देशों में तुमने क्या अनुभव रहा है, जहां भी उन्होंने लोकशाही में ही वो आगे ले गए हैं, इन सब चीजों के का ध्यान रखते हुए हमें आगे जाना पड़ेगा। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, आज के बजट में कोई चीज ऐसी नहीं, मैं और इतना कैटेगोरिकल कहना चाह रहा हूं, एक चीज नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये देश को पीछे ले जाएगा, रिग्रेसिव है, या हम उसको जो देश की कमियां हैं उसको परपेचुएट कर रहे हैं, हमेशा के लिए स्थिर कर रहे हैं। दुआ साहब, आपने बड़ा अच्छे से समअप किया। मेरे ख्याल से जो दर्शक देख भी रहे होंगे उनको आसान भाषा में समझ में आया होगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने वाला बजट है, और एक भी चीज ऐसी नहीं दिखी जो अर्थ के जानकार हैं, जो इकोनॉमी के जानकार हैं, जिससे ये लगे कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को
वापस रिवर्स डायरेक्शन में ले जा सकता है, उल्टे दिशा में ले जा सकता है। बहुत ही सकारात्मक तौर पर अजय दुआ साहब ने रिएक्शन दिया है। फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं आने वाली होंगी आने वाले वक्त में। हम यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। बने रहिए आप एनडीटीवी इंडिया के साथ।